Welcome students. This is our first video in number theory. We have very important questions based on principal mathematical inductions and a very important results. The product of r consecutive integers is divisible by r factorial. So देखिए, if n is greater than 2, then show that the given statement n5 minus 5 n cube plus 4n is divisible by 120. Okay, so we will prove it by principal mathematical inductions. So देखिए, let Pn is equal to n5 minus 5 n cube plus 4n. बेसिकली प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शंस आपका n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, बट वी विल हैव टू टेक हियर n इज ग्रेटर देन 2. सो लेट पुट n is equal to 3. So P3, that is 3 to the power 5 minus 5 into 3 cube plus 4 into 3. You will get 243 minus 135 plus 12, and you will get 120, and 120 is divisible by 120. Okay, thus the result is true. Result is true for n is equal to 3. Now assume that the result is also hold for some n, that is Pn is equal to n5 minus 5 n cube plus 4n is equal to 120 some k, where k belongs to इंटीजर. दैट मीन्स Pn स्टेटमेंट के अंदर ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 120 वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम इंटीजर, दैट इज P120 डिवाइड्स Pn. ओके, P120 डिवाइड्स Pn बिकॉज इसका मल्टीपल है, सो दिस डिवाइड्स Pn. ओके, नेक्स्ट देखिए. नाउ वी हैव टू prove the result is true. Result is also true for n plus 1. Okay, so Pn plus 1, this is n plus 1, 5 minus 5 n plus 1 cube plus 4 into n plus 1. Now we have to prove this Pn plus 1 statement is also multiple of 120. Okay, so we can take n plus 1 as common in all the statements. So you will get n plus 1, 4 minus 5 n plus 1 squared plus 4. Okay, you also can write n plus 1, this is n plus 1 square. n plus 1 square आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो n plus 1 square minus 5 plus 4. okay, now n plus 1, you can write n plus 1 square, write this formula, n square plus 2n plus 1 minus 5 plus 4. okay, you also can write n plus 1 square n square
plus 2n minus 4 and plus 4. Okay, you also can write n plus 1. ये जो n प्लस 1 स्क्वायर है इसको कंप्लीट अब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसके साथ, तो कितना होगा देख लीजिए एक बार। n प्लस 1, देखिए n प्लस 1 को हम n प्लस 1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो n इंटू n प्लस 2 टेकिंग n एज कॉमन एंड मल्टीप्लाई विद माइनस 4 विद n प्लस 1 स्क्वायर n प्लस 4. Okay, so n plus 1, n plus 1 square n into n plus 2. You can also can write 4 this n square plus 2n plus 1 plus 4. Okay, now n plus 1, n plus 1 square n प्लस 2 माइनस 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4n स्क्वायर माइनस 8n, दिस इज माइनस 4 प्लस 4. सो दिस विल कैंसिल आउट, और इसको लिख सकते हो आप n प्लस 1, n प्लस 1 स्क्वायर n प्लस 2 माइनस, you can take 4 as a common. Okay, you can take minus 4 as common and you will get n square plus 2n. This is n square plus 2n. Okay, और क्या लिख सकते हैं आप इसको, n plus 1, n plus 1 square n plus 2 minus 4 n into n plus 2. Okay, you also can take as common n plus 2. So take लीजिए कॉमन n प्लस 1 n प्लस 2, तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा n प्लस 1, दिस इज n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4. ओके, आप इसको लिख सकते हो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 2n plus 1 minus 3 minus 4. Okay, also you can write n plus 1, also you can write n plus 2 n square plus 2n minus 3. Okay, so n प्लस 1 n प्लस 2, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो यू विल फाइंड n माइनस 1 n प्लस 3. फैक्टराइज करके आप इसको लिखते हो तो यू विल गेट दिस. सो यू विल सी n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 and n plus 3. This is a product of the product of any r consecutives integers is divisible by r factorials. So this product is equal to Pn plus 1. So we can say this is divisible by 5 factorials into some k1 where k1 belongs to Z. So what is this? This 5 factorials is nothing but 120 into k1 where k1 belongs to Z. So we can say this Pn plus 1 is divisible by 120. Hence your statement is true for n is equal to
3 and statement is, you assume the statement is true for some n and you proved the statement is also true for n plus 1. Hence by principle mathematical induction result is true for all n belongs to natural numbers. तो थैंक यू. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो.